Congratulations again on 100th episode. मेरे लिए it is a symbol and a mark of consistency, which is something that I value a lot in me and I respect in others. I know कि आसान नहीं होता 100 episode of a podcast release करना. Creativity for us is a process and we are running what is a content factory and content ship होता रहता है every single day without fail. So if you are a content writer, don't use AI to write your content. If you are a graphic designer, don't use it to create that thumbnail or that graphic post. फिर शाहरुख बोलते हैं कि सर मौका पाने के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन मौका पाने के बाद मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता. That career is a lot about consistency than about winning. You, if you are consistent, have a far higher chance of winning than if you focus more on winning. So focus more on being consistent. जैसे ही मैं स्टेज पे गया मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया. ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए? कॉन्फिडेंस कभी कुर्सी में बैठ के ऑडियंस में होने से नहीं आएगा, बट कॉन्फिडेंस हमेशा रियल लाइफ एक्टिविटी में एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस से ही आता है. द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इन दैट मोमेंट इज यू योरसेल्फ. सो यू कैन नॉट एवर गिव अप ऑन योरसेल्फ. जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं, आप जिंदगी में कंट्रोल किसी और को दे देते हैं. कोई भी सुबह उठ के ये नहीं बोलता है कि आज मैं अंकुर की जिंदगी बर्बाद करूं. Then why you left it? No, आपके सवाल ऑलमोस्ट मुझे कहते हैं पकड़े गए. That's always a hard one. Let me try and attempt. The real answer, and it's not a very useful answer, so I'm sorry for giving this answer, is Welcome to Let's Talk Clarity podcast, and today is a very special day, special milestone episode with a special guest on our podcast. But before everything else, let's welcome Ankur on the show. Ankur, welcome to the show. Thank you so much, Rakesh. Such a pleasure. Congratulations on 100th episode, and thank you so much for having me on this special episode. Means a lot. So with this, let me first start with my gratitude that you have given this opportunity and come on my show to share your wisdom, knowledge, career transformation journey. It means a lot to me. I'm truly grateful and thankful for it. Thank you. That's really kind of you, and it is an absolute privilege to be here. Thank you. So Ankur, let's start with our podcast. And first and foremost, I'm always in admire with your authenticity and the way, because I'm watching your content from 2018 when Ankur Wariku was Ankur Wariku with Groupon and so I'm always in admiration with your authenticity. So Thank you. so Thank you. so how you started with those authenticity, and you're still carrying those authenticity while creating your content? It's a great question to start with. I feel that authenticity, Rakesh, has a very important eligibility criteria, and that eligibility criteria is that you actually know who you are, or at least you've done enough work on it, so you have a very good understanding of what are your strengths, what are your weaknesses, what are you good at, what are you not good at, what are the things that you like doing, what are the things that you are not enjoying, what are the things that trigger you, what are the things that make you calm. And I think my life, not by design but just by complete luck, has been a very topsy-turvy journey, lots of ups and downs. And whenever I have failed, whenever I have stumbled, whenever I have not been able to accomplish जो मुझे लगता था I should be. Is it okay अगर मैं थोड़ा बहुत हिंदी में use करूँ? Yes. English is okay. Yes. Yeah, perfect. So I made it a point that I actually reflected on कि वो हुआ क्यों? Why did I end up in this position? Because ऐसा तो नहीं है कि मैं समझदार नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है that मैं अच्छी पढ़ाई के एक्सपीरियंस के साथ नहीं आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास के लोग मुझे अच्छा सा एडवाइस नहीं देते हैं. But despite all of that, why did I not accomplish what I had to? And that journey really helped me understand myself. So I would say that I'm extremely self-aware. And self-awareness के साथ
आई फील एक क्लैरिटी आ जाती है कि अगर आप खुद को जानते हैं हम्म, तो बहुत कम नई चीजें दुनिया आपको आपके बारे में बताती है, क्योंकि आपको पहले ही अपने बारे में वो सारी चीजें पता है. हम्म, सो द साइकिल ऑफ फीडबैक बिकम्स मोर ऑफ वैलिडेशन देन डिस्कवरी. तो राकेश बोलेंगे कि अंकुर ये चीज आप में अच्छी है, ये चीज आप में अच्छी नहीं है, एंड हम्म, आई बी लाइक हाँ राकेश मुझे ये पता है. सो ओके, जो आप बोल रहे हैं ना वो मेरे नॉलेज को वैलिडेट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा नया सीखने को या जानने को मिल रहा है जिसके बारे में मुझे पहले कभी पता ही नहीं था. एंड दैट आई थिंक मेक्स इट फार इजियर टू बी ऑथेंटिक, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है यू आर हु यू आर एंड यूर ओके विद दैट. ओके, यूर ओके विद द फैक्ट कि मैं गलतियां करता हूं, यूर ओके विद द फैक्ट कि मैं किसी चीज में अच्छा हूं, यूर ओके विद द फैक्ट कि मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया, एंड बहुत सारी चीजें जो मैं हासिल नहीं कर पाया, आई कांट चेंज दैट, एंड आई लव द करंट वर्जन ऑफ मी. हम्म, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी एंड एक्ट माई सेल्फ, एंड दैट इज अ जर्नी. ये रातों रात नहीं आता है. इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई अपने 20s में ही, अपने 30s में ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनके पास भी आ जाए, क्योंकि काफी वक्त लगता है खुद को समझने में, खुद को जानने में, एंड खुद के रियलाइजेशन एंड डिस्कवरी से कंफर्टेबल होने में कि हम्म, अरे मैं वाकई में ये हूं, एंड आई हैव टू बी ओके विद दैट इफ आई डोंट वांट टू चेंज इट. एंड दैट आई थिंक मेक्स इट easier. I wouldn't say easy, but easy, easier easier, to be authentic. And I can tell you with conviction, ये मैं अपने experience से बोल रहा हूँ, that once you are comfortable with being authentic, life becomes really, really simple. Because you then have to do nothing to pretend. You are the same person in a mall, you're the same person in a YouTube video, you're the same person in a podcast conversation, you're the same person if you were to meet otherwise. And that just makes it so easy to live life, क्योंकि आपको ढोंग नहीं रचना रखता. एंड yes, आपको ये नहीं याद रखना पड़ता कि अरे राकेश के सामने मैं कैसा था, और अमित के सामने मैं कैसा था, और नेहा को मैंने क्या बोला हुआ है, और गौरी मेरे बारे में क्या सोचती है. दिस नथिंग. यू आर just being yourself, and there will be some people who like you, some people who won't like you. wow, wow. It is, यहाँ से I could pick up some of the key words. That is self-aware. That is the most important thing, that अपने बारे में जानना और अपने बारे में मतलब to be that what is the transformation? The transformation is I got to know about myself. That is the बिल्कुल, self-aware. Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. So Ankur, let's start with the career transformation which you had, and from PhD, from your own startup, and then living your own startup. But let me ask you the first question, and it is going on in my mind from so many days, that PhD छोड़ते वक्त अपने पेरेंट्स को कैसे मतलब कन्विंस किया? That was सबसे सबसे मुश्किल चीज वही थी यार. दो तीन चीजें हुई जिसने ना उस जर्नी को आसान किया. okay. नंबर एक, एंड दिस इज अगेन आई से अ लॉट ऑफ लक इन माय लाइफ दैट हैज प्लेड अ रोल. तो सबसे पहले जब मैं यूएस गया था अपनी पीएचडी के लिए, आई वेंट ऑन 100% स्कॉलरशिप. Hmm. एंड आई टुडे रियलाइज कि अगर वो ना होता, एंड अगर मैं खुद के खर्चे पे गया होता, it may have been very easy, perhaps impossible, Hmm. to convince myself, forget my parents, कि मुझे drop out करना चाहिए. Because there is a certain financial cost that you have added to the time cost that you've already spent. But because there was no financial cost, it was relatively easy for a decision to be made. कि ठीक है, try किया, and scholarship पे किया, खुद के पैसे नहीं लगे, and it is what it is. So that's reason number one, which was easier. Hmm. Reason number two, my parents were also realizing कि दूर रहने में उतनी खुशी है नहीं. We are very close, and I was their first child. Okay. I was always at home, never stayed outside. तो सडनली जब इतनी दूरी हो गई, और वो भी ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि जब मन चाहा फ्लाइट पकड़ के आ गए. वक्त भी बहुत अलग था, 2002-2004 की बात है, तो थिंग्स वर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. मुझे अभी भी याद है, मैं हफ्ते में सिर्फ एक कॉल 15 मिनट की अफोर्ड कर पाता था, बिकॉज दैट वाज ऑल द मनी दैट आई हैड. तो वो एक 15 मिनट की कॉल वाज द ओनली कनेक्शन आई हैड विद माय फैमिली फॉर एन एंटायर वीक.
आज अलग दुनिया है जहां व्हाट्सएप कर लो, फेस टाइम कर लो, सब कुछ चलता रहता है ये सब. बट दैट डिस्टेंस एट सम लेवल वाज लाइक, ठीक है, अगर बेटा वापस आ गया, मे बी लाइफ विल बी ओके. Okay. एंड द थर्ड थिंग वाज, I think I gave them that confidence, not that they were convinced, but at least it would have helped, कि मैं जिंदगी में कुछ तो कर लूंगा. ऐसा नहीं है कि भूखा नंगा मरूंगा. इतना दिमाग तो है और इतनी मेहनत तो कर सकता हूं कि जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी. आई Okay. डोंट नो व्हाट इट विल बी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन ये था कि कुछ तो कर ही लूंगा. बट आई हैव टू एडमिट दैट इट वाज much harder for them than it was for me to take this decision, क्योंकि मैंने तो अपने दिमाग में बहुत प्रोसेस किया था, ये बहुत ज्यादा. बहुत And ज्यादा. I was very clear कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, टाइमिंग एंड एवरीथिंग. बट फॉर देम इट वाज लाइक अ मैसिव सेटबैक, क्योंकि फॉर नियरली 8 years मैंने सिर्फ यही गाना अपनी जिंदगी में गाया था कि मैं यूएस जाऊंगा, मैं पीएचडी करूंगा, नासा ज्वाइन करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड सडनली वो अब अरमान मैं अपने हाथों से ही कुचल रहा था. And they didn't know what is going to happen, and they had pegged their life's future on my going to the US and making life happen. So it was a far harder thing for them to consume. But to their credit, despite their disappointment, they were like, okay, if you want to do it, you must be convinced that that is it. And ये दो तीन चीजें जो मैंने बताई, it helped to some extent with making the decision easier. वाओ वाओ. एंड खुद पे कॉन्फिडेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट कॉन्फिडेंस यू गिव इट टू योर पेरेंट्स आल्सो एंड दे अंडरस्टूड. Yeah, सो so true. या सो यहाँ पे यही है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, बट नाउ दे आर नॉट लाइकिंग द सब्जेक्ट और कॉलेज और द एनवायरनमेंट, बट उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एंड दे आर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो. सो हियर कम्स द क्वेश्चन दैट ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस राकेश, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एक चीज से आता है, और वो है योर एबिलिटी टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जीत से आता है, एंड दे आर राइट. बट बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस हार से भी आ सकता है. कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस से आ सकता है. इनफैक्ट आज सुबह ही मैं अपने टीम मेंबर से बात कर रहा था, एंड शी इज फ्रॉम जोधपुर, शी स्टेज विद हर फैमिली, एंड शी लव्स टू ट्रैवल. सो शी वाज लाइक कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना उनको, आई सडनली फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं हर एक चीज खुद मैनेज कर रही होती हूँ. कोई हेल्प नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं है. सो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेफ्टी, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फूड, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई क्लोथ्स, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सपीरियंसेस. एंड सडनली जब मैं ये सारी चीजें खुद करती हूँ, आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट. एंड दैट्स सच अ फैसिनेटिंग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल पे जाना कोई हाई पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जीत है. इट इज सिंपली अनदर चैप्टर, another event. But that event triggers confidence in you because you realize that there is a sense of progress that you feel within. And जितना consistently आप उस progress को महसूस कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप confident feel करेंगे. So I tell people कि pick something that you're scared of. Let's say public speaking. कोई भी माँ के पेट से public speaker बन के नहीं आता है. हर एक इंसान लड़खड़ाकर, गलती कर कर, स्टेज पे पहली बार जाकर तभी सीखता है. लेकिन जब आप पहली बार स्टेज पे जाएंगे, आप गलती करेंगे, फिर दूसरी बार जाएंगे, कम गलती करेंगे, एक प्रोग्रेस का सेंस मिलेगा. तीसरी बार जाएंगे और कम गलती करेंगे, फिर चौथी बार जाएंगे, शायद बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएंगी, फिर पांचवी बार जाएंगे और कम होगी. जितना आप कंसिस्टेंटली ये करते रहेंगे, आप ही को महसूस होगा कि आप बेहतर होते जा रहे हैं, और उसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस कभी कुर्सी में बैठ के ऑडियंस में होने से नहीं आएगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं. वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ईगो है. बट कॉन्फिडेंस हमेशा रियल लाइफ एक्टिविटी में एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस से ही आता है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि आप जितने भी यंग हैं, जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, काम करना शुरू करिए. एक्शन. हारेंगे, गलतियां होंगी, ठोकरें खाएंगे,
लेकिन जितना आप अपने आप को वापस उठा के फिर से वही काम करेंगे और एक प्रोग्रेस का अनुभव महसूस करेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इट इज मोर अबाउट द एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, बैठने से नहीं बिल्कुल, होगा थिंकिंग। बिल्कुल तो यहाँ बैठने से नहीं। पब्लिक स्पीकिंग में मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ। द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन ऑन टू द स्टेज, एंड जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं दिख रहा था, कितने लोग बैठे हैं क्या। इट वाज टोस्ट मास्टर वाह, एंड स्टेज पे गया, कुछ नहीं देखा, एंड मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। बट व्हेन आई केम बैक टू द सीट, और वहाँ पे टोस्ट मास्टर में जो भी प्रेसिडेंट थे, आफ्टर द मीटिंग ही केम एंड टोल्ड, यू आर अ नेचुरल स्पीकर। वाह, वो एक लाइन ही मेरे लिए काफी थी। एंड फ्रॉम हियर मीन्स आई गॉट टू नो दैट एप्रिसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्शन एंड एप्रिसिएशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड फ्रॉम बिल्कुल, दैट्स सच अ ग्रेट स्टोरी, सो इंस्पायरिंग। एंड फ्रॉम देयर आई वेंट ऑन टू इवेंट्स, और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्टेड टू वेंट इनटू पब्लिक स्पीकिंग। और पहली बार मैं वैसे स्टेज पे गया, मैं अपने खुद के इवेंट में ऑर्गेनाइज करके गया at the age of 37, and it was very empowering to go there. वेरी जितना नाइस, जो वेरी समझ में आया, मैं बोल पाया नहीं बोल पाया, बट इट वाज एम्पावरिंग फॉर मी। सो गुड, सो गुड। सो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, एंड देन so you came back from US and then joined consultancy, और फिर consultancy job भी you left, and within 3 years, I think 3 4 years, यस, you left. यस। So that was also very big decision and very comfortable, very good job you left. तो वो decision कैसे लिया? वो डिसीजन एक क्लैरिटी से लिया था राकेश कि 3 साल हो गए थे। मैं जो स्टार्टअप मैं शुरू कर चुका था, क्योंकि वो मेरे पार्टनर ने शुरू किया था। इट वाज कॉल्ड secondshadi.com, और उसके बारे में भी शायद हम बात करेंगे। हम्म, तो वो करीब 1 साल से चल रहा था। तो साथ साथ में मेरी कंसल्टिंग की जॉब चल रही है, स्टार्टअप भी चल रहा है। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जैसे हम बात कर रहे थे, वो भी आ चुका था कि यार बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर हम्म, रहे हैं, 1 साल हो चुका है तो पता है। हम्म, एंड आई वॉज ऑल्सो लीविंग कंसल्टिंग ऑन अ हाई। मैं काम में बहुत अच्छा था, लोग मेरे काम को पसंद करते थे, मुझे इस काम में मजा आता था। तो मुझे ये भी पता था कि अगर फॉर वट एवर रीजन स्टार्टअप या जो भी मैं चीज के लिए छोड़ रहा हूं वो काम ना किया, तो मैं वापस कंसल्टिंग में आ सकता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं एक लो पॉइंट पे या किसी भी नेगेटिविटी के साथ इसको छोड़ रहा हूँ। पीपल okay, वर एक्चुअली सेइंग, यू नो व्हाट, वी आर एक्साइटेड फॉर यू, वी होप यू डोंट कम बैक, बट इफ यू एवर कम बैक वी आर ओके। okay, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैकअप था, एंड दैट मेड इट वेरी इजी। एंड आई ऑफन से दिस कि इन लाइफ साइकोलॉजिकल बैकअप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो साइकोलॉजिकल बैकअप एक इंसान हो सकता है जो आपको बोले, यू नो व्हाट, मैं तेरे पीछे हूं, तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, इन कुछ भी हुआ, यू कम बैक, आई टेक केयर ऑफ इट। वो साइकोलॉजिकल बैकअप पैसा हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल बैकअप आपका नेटवर्क हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल बैकअप आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन ऑलवेज थिंक कि मेरा साइकोलॉजिकल बैकअप क्या है। वो असली में होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो बैकअप है। एंड इफ दैट हैपेंस, then you get a lot more confidence of taking that decision that you are about to take. And I'm sure आपके साथ भी यही हुआ होगा, and I'd love to hear your story। जब 19 साल आपने बिताए इंडस्ट्री में and then you decided to go full time, हम्म, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैकअप होगा, whether it is experience, whether it is money, whether it is going back to the same thing, or what you had started around coaching that you saw yielding results, whatever. हम्म, लेकिन these are very important tools for you to make important decisions in life. यस, विद मी मीन्स लास्ट 4 5 साल से मैं कोचिंग में था, एंड आई स्टार्टेड टू गेट सम रिजल्ट्स, एंड दैट Yeah. गेव द कॉन्फिडेंस। वो करते प्रोग्रेस, दैट द सेम द प्रोग्रेस आई वाज सीइंग इन माय कोचिंग एंड पॉडकास्ट, एंड दैट गेव द कॉन्फिडेंस। एंड Yes. साइकोलॉजिकल बैकअप यही था कि डेफिनेटली आई कैन गो बैक टू जॉब अगेन, बट नॉट इन ऑयल इंडस्ट्री, बट Yeah. इन कोचिंग। Yeah. Exactly. Exactly. And यस, and and I love that, and I'm so happy कि
आपको वो नहीं करना पड़ा। एंड इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है कि अक्सर जो साइकोलॉजिकल बैकअप होता है ना, वो कभी इस्तेमाल होता नहीं है, वो साइकोलॉजिकल बैकअप ही बन के रह जाता है। बट दैट्स फाइन, दैट इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ इट, एंड इफ यू कैन यूज इट वाइजली, व्हाई नॉट? Wow, wow. So, यहाँ पे you have taken the decision, you left your consultancy, but you have talked about you were good at your work, at your या work. या Yes. So that is very important because जब भी हम ऑफिस में काम करते हैं, वी आर नॉट बेस्ट, मीन्स काम सब हो रहा है बट फिर भी ऐसे लगता है यार कुछ कमी रह गई, या तो बॉस की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से। सो हाउ यू मैनेज दिस थिंग कि भाई वर्क में भी अच्छे हैं? आई थिंक मुझे काम करने में जेन्युइनली मजा आता है। एंड आई हैव आई हैव वन, आई कॉल इट अ क्वालिटी बिकॉज आई वांटेड टू बी नोन एज अ क्वालिटी। आई हैव अ क्वालिटी कि मुझे जिंदगी में कंप्लेन करना बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं, आप जिंदगी में कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। आप ये बोलते हैं कि यार मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन तुम अगर अपना काम कर लोगे ना तो मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। तो हम सरकार के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, लोगों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, अपनी पार्टनर के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, माँ बाप के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, मैनेजर के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, कंपनी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन करना बंद कर दें, ये भी नहीं कि किसी चीज में कंप्लेन कर देना, 100% नो कंप्लेनिंग, देन यू आर कंप्लीटली इन कंट्रोल। दैट डजंट मीन कि चीजें आपके अनुसार होंगी ना, मतलब यह है कि जो भी होगा उसका श्रेय या उसका ब्लेम आपको जाएगा। यू आर द सोल consequence of the decisions and actions you take. That is who I am. And because of that, I tend to like everything that I do because I am not complaining. There will be some things that I'm not good at, there'll be some things that I don't enjoy. But if I put my mind and my heart and soul to it, I will find a way of being good at it, maybe without feeling happy doing it. So consulting में वही था. I was good at it. I was actually happy doing it. It made a lot of money for me. But I just felt कि consultants की दुनिया को जरूरत नहीं, हम ना जबरदस्ती अपनी अहमियत खुद ही बनाते रहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये काम इतना मजेदार नहीं होगा। And that's why at some point when the startup of course showed progress, I made that decision. But I genuinely feel कि अगर इंसान कंप्लेन ना करे ना, तो Yes. बहुत सारी चीजें बहुत आसान होने लगती है, एंड आप उनमें बहुत अच्छे होने लगते हैं। Take 100% responsibility of your life. Yes. Absolutely, just take responsibility for your life. Okay. Okay. Yes. That's super important to It avoid is. complaining. Leave that complaining attitude. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. So, यहीं पे एक और चीज के बारे में बात करते हैं बिकॉज यू आर इन द जॉब, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप पे आएंगे, बट जॉब में हाउ यू मैनेज योर बॉस? In what sense? मीन्स इन करियर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं कोच करता हूँ, मे बी 70% का यही रहता है कि बॉस के साथ में कैसे इक्वेशन करें, बॉस इज नॉट गुड, या फिर बॉस के साथ वो परेशान रहते हैं। सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट बॉस को, हाउ टू मैनेज द बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप? Yeah, I have 2 or 3 ways of doing this. ऐसा तो नहीं है कि हर एक इंसान आपको बहुत पसंद आएगा या हर एक इंसान आपको पसंद करेगा. So there will of course be some places where it doesn't work. Here is what has worked for me. Number one, I will always start with the assumption कि कोई भी सुबह उठ के ये नहीं बोलता है कि आज मैं अंकुर की जिंदगी बर्बाद करूंगा, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी इतनी मुश्किल है, उनके खुद के इतने काम है, खुद की इतनी जज्जोजहद है. So nobody is out there to spoil your life. You just happen to be in the way of what they want to do. It is not personal. It has nothing to do with you as an individual. It is to do with your role, your function, your industry, or just luck that you happen to be there.
but nobody chose to harm you or make life difficult for you. That is point number 1. Point number 2, तो अब अगर किसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए या मुश्किल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन तब भी तनाव है, तो उसका कारण क्या है? और उसका कारण यह है कि वो दुनिया को आपसे अलग देखते हैं. उनका तजुर्बा या उनकी ट्रेनिंग या उनकी पढ़ाई या उनका माइंडसेट या उनकी अपब्रिंगिंग जो भी हो, उसकी वजह से वो सेम चीज देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन उनका कंक्लूजन आपसे अलग है. Here's an example. Let's say you are in sales and you are meeting somebody from operations and sales वाला बोल रहा है यार क्लाइंट ने ना पैसे दे दिए, उनको माल कल चाहिए. And operations is like सर कल माल पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि 4 फॉर्म भरने हैं मैंने और ट्रक में जाएगा और 400 किलोमीटर चलना है या जो भी है, संभव नहीं है. एंड दोनों लड़ रहे हैं. सेल्स वाला अपनी जगह पे सही है कि यार क्लाइंट ने पैसे दे दिए हैं, उनको माल चाहिए. ऑपरेशंस वाला अपनी जगह पे सही है कि सर फिजिकल डिस्टेंस है, ऐसा तो है नहीं है कि कुछ कर सकते हैं. सो इट इज नॉट दैट दे आर फाइटिंग ओवर व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. दे आर जस्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द लेंस दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल देयर लाइफ. सो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, यार इसे ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता? ये दुनिया को किस नजर से देखते हैं जिस नजर से मैंने कभी शायद दुनिया को नहीं देखा है? बिकॉज दैट देन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे सेइंग और डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. वो व्हाई जानना बहुत जरूरी है, वरना तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे. एंड देन द थर्ड, व्हिच इज एन ऑब्वियस कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट टू, कि अब अगर आपको पता चल गया कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा पेश आ रहे हैं, then the next step is how can you solve it? Is there a way to solve it? Is there a way to find a middle ground? So it doesn't become about people. It is not like यार राकेश मुझे पसंद नहीं है, राकेश ना हमेशा अड़चन पैदा करता है, राकेश ना हमेशा मेरे फ्लो को खराब कर देता है. नो, राकेश को आपकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपके काम से कोई फर्क पड़ता है. राकेश तो अपना काम कर रहा है एंड आप अपना काम कर रहे हैं. तो अगर आप ये समझ गए कि राकेश वो काम क्यों कर रहे हैं, you will then try to solve the problem, not have a fight between two people trying to solve for their egos. Because office is always about an ego fight. It is never about a process fight. This has helped. Of course, किसी ने मुझे ये सिखाया नहीं, तो धीरे धीरे ठोकरे खा के सीखा, सब जानने की कोशिश करी, समझा. कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत आसान होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. तो हर एक इंसान के साथ थोड़ा सा घूम फिर के एक अलग सा हैंडलिंग का तरीका जानने की कोशिश करी, एंड दैट हेल्प्ड ओवर द कोर्स ऑफ थिंग्स. सो माय ओनली रिकमेंडेशन टू एवरीबडी हु struggles to manage people or work with them or has difficult relationships with their work colleagues is please remind yourself, वो सुबह उठ के आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं उठे हैं. It is simply because they have different experiences from you and they look at the world differently from you. So please recognize कि वो अंतर क्या है, and जब वो अंतर पता चल जाए तो फिर उस अंतर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उस इंसान से मत लड़िए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला. Wow, this is super important that they are also human being. They are also having the same fear, same everything. सुबह उठ के वो they are also working. So this is very important. And hey coaches and want to be coaches, I have a great announcement for you. If you want to start your coaching business or want to level up your coaching business, we are thrilled to announce our formula for building a coaching business through the power of podcasting. It is not just an online course. It's a community of coaches where we meet every week and grow together to build your coaching business along with your podcast. So, click the link to attend my webinar, Podcast Made Easy for Coaches, and jump into the Clarity 10x community. Now, enjoy the episode on Let's Talk Clarity.
So Ankur, let's move on with the journey and from job to entrepreneurship. These are two different ball game, consultancy and entrepreneurship, and from working and then become your own boss. Yeah. So what has changed? Job से entrepreneurship में जब गए, so क्या क्या challenges आए और क्या change हुआ? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज यही था कि जो मैं अभी कुछ ही देर पहले बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एट होम एंड लिविंग इंडिपेंडेंटली। जब आप घर पे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती हैं। हम्म, शायद ज्यादा से ज्यादा कोई आपसे पूछेगा कि आज क्या खाना है, लेकिन आपके बाथरूम में आपका तौलिया पहुंच गया होगा, साबुन अगर खत्म हो जाएगा तो साबुन आ जाएगा। change हो जाएगा. आप, हाँ, लाइक सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, एक घर का प्रोसेस बना हुआ है एंड आप उस प्रोसेस का एक भाग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आप सोचते भी नहीं होंगे या रुक कर कभी एहसास भी नहीं करेंगे कि यार ये जरूरी है या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद अकेले इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करेंगे तो हर एक डिसीजन आप ही को लेना है कि टिश्यू पेपर कौन सा लेना है, साबुन कौन सा खरीदना है, टूथपेस्ट कौन सा होना चाहिए, वो तौलिया जो बाहर सूख रहा है उसको अंदर कौन लाएगा, कब लाएंगे, वो बारिश हो गई तो फिर कौन भाग रहा है, वो घर की घंटी बज रही है तो कौन खोल रहा है, वो फोन आ गया है तो कब उठाना है। तो एवरीथिंग बिकम्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप अपने आप को एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो फिर तो आप हर एक चीज में फंस जाएंगे एंड कोई भी चीज टाइम पे नहीं हो पाएगी, अच्छा तो बहुत दूर की बात है। एंड दैट वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हेन यू आर वर्किंग इन अ जॉब। there's so many things that are just taken care of and you don't even realize it. Like Yes. आपने ज्वाइन किया, कोई आपका लैपटॉप लेके खड़ा है, किसी ने आपका ईमेल सेटअप कर लिया है, किसी ने आपको वो फूड के कूपन दे दिए हैं, आपका बैंक अकाउंट खुल चुका है, आपकी तनख्वाह फिर आ जाएगी, आपकी रीइंबर्समेंट फाइल हो जाएंगे, ये सारी चीजें बस ऑटोमेटिकली हो जाती थी। एंड कंसल्टिंग इज अ वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी पैम्परिंग काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली। तो आपका ट्रैवल पूरा सॉर्टेड है, आप एक कॉल करेंगे कैब आ जाएगी, सब कुछ हो जाता था। एंड Okay. सडनली यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग इज ऑन योर ओन। मैं शटर खोलता था, शटर बंद करता था, अटेंडेंस भी लोगों की मैंने लेनी है, खुद किस समय पे पहुंचना है, किसी को ज्वाइन करवाना है तो उनके लिए लैपटॉप खरीदना है, उनका ईमेल सेटअप करना है, एवरीथिंग then has to be managed by you, and that is a huge difference. And I think it's not so much administrative but the actual joy and hardship of running that company कि अब खुद ही वो प्रोडक्ट बनाना है जो बिकेगा, खुद ही सोचना है कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी, खुद ही सोचनी है कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, खुद ही डिसाइड करना है कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे उसको लॉन्च करेंगे, कौन सा हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, उनसे हम क्या बोलेंगे, क्यों वो हमें चूज करेंगे, कैसे हम उनको सपोर्ट करेंगे, कैसे अगर उनको कोई दुविधा होगी उसको सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग हैज टू बी थॉट थ्रू, विच इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बट सच अ वंडरफुल वन, क्योंकि वो वाकई में आपको कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बड़ा कर देता है। Okay. Growth. Growth and growth here, Mm-hmm. it's just you just grow so fast as an individual. Okay, okay. So here I could see that so many things to manage, HRV, sales V, marketing V, product V, and everything. So how you manage the time also? Means इन सब चीजों के लिए तो time manage करना जरूरी है. So how you ये आई हैव टू एडमिट, आज जितनी खूबी से मैं अपना वक्त मैनेज करता हूं, मैं 10-15 साल पहले नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। okay. आई इनफैक्ट यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरा कैलेंडर हमेशा भरा हुआ है, दैट आई हैव नो टाइम टू ब्रीथ, कि आधे 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 घंटे की बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक मीटिंग्स होती थी, सुबह 7-8 बजे से शुरू, रात को 9-10 बजे तक, सोने का टाइम नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं। एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एरा। टुडे आई एम लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ। सो आई डोंट थिंक टाइम वाज व्हाट आई वाज ऑप्टिमाइजिंग फॉर व्हेन आई स्टार्टेड। हाँ, Okay. ये था कि मैं एक दिन में वो हर एक चीज हासिल या मैनेज कर पाता था जिसका मैंने प्लान किया है, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर ऑफ व्हाट आई वांटेड टू डू एंड बाय। बट आई एम ऑल्सो absolutely admitting that a lot of things got compromised because of the way I was as a founder. My family life got compromised. I didn't have time for friends. I didn't have time for family. I didn't have time for even myself.
And that was something that I just chose to do because I knew कि इस पॉइंट पे तो ये स्टार्टअप ज्यादा जरूरी है, and if I can make that happen, then that is more important. Okay, okay. So it was learning through the experience. Yes, Yes, time yes, manage karna, so calendar manage absolutely, karna and all everything. So absolutely. here comes very important question that if someone is just graduating in 2025 March Mhm. में graduation होने वाला है. So from where they can start? Job, entrepreneurship, business, or या फिर higher education, means how he or she can take that decision. My personal recommendation will be everyone should work for a few years. Okay. क्योंकि you just get a एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, which is very important. Okay. Yes. शुरुआत में खुद का पैसा आता है, आप उसको संभालना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत अपने मजे के लिए यूज करते हैं. Hmm. दैट फ्रीडम इज ब्यूटीफुल टू टेस्ट, एंड आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन टू. Wow. फिर कंपनी में काम करके ये भी समझ में आता है कि कंपनियां काम कैसे करती हैं, कौन सी चीजें Systems. अच्छी होती हैं, कौन सी चीजें नहीं होती हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क यू डू. अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सिस्टम्स प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं. अगर आप छोटी कंपनी में काम करेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक इंसान बहुत सारी चीजें कैसे संभाल सकता है, तब भी कर सकता है. But that experience just trains you. It gives you again that sense of confidence through progress. Yes. And then after 2 to 3 years, you can decide to either continue with the job, maybe go for a specialization अगर चाहिए तो masters कर सकते हैं, or just continue with the job, or maybe decide to do something on your own. ये मैं बहुत strongly हमेशा मेंशन करता हूं कि हम एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं राकेश जहां स्टार्टअप्स को ना बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है, फाउंडर्स को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है. सब बोल रहे हैं आप तो फाउंडर हैं, वाह वाह वाह. वो देखिए 9 से 5 Mhm. नौकरी पेशा लोग कैसे बंद गए हैं, अपना जमीर बेच दिया है, अपनी आत्मा बिक गई है, Yes. किसी के और तलवे चाट रहे हैं, किसी के और ऑर्डर्स ले रहे हैं. ये देखिए फाउंडर क्या कमाल की जिंदगी है, खुद के मालिक हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. सब बकवास है, सब बकवास है. हर एक इंसान उतनी ही मुश्किल में है, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब में हो. एंड इट इज जेन्युइनली अ फंक्शन ऑफ कि आपके लिए सही क्या है. तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली मेंशन करता हूं कि फाउंडर बनना सबके लिए ना संभव है, ना ही पॉसिबल है. कुछ लोगों के लिए एक जॉब बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक हायरार्की प्रोवाइड करती है, एक ऑर्डर आता है जिंदगी जीने का. एंड कुछ लोगों के लिए फाउंडर बनना बहुत अच्छा होता है, अपना बिजनेस चलाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो वैसी फितरत के हैं. एंड Mhm. चूजिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग. एंड Yes. इंसान भी बदलता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप जिंदगी भर जॉब कर रहे हैं तो जिंदगी भर जॉब ही करते रहेंगे. लाइक यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल. आपने नियरली 20 साल काम किया एंड देन नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू रनिंग योर ओन सेटअप. एंड दैट्स बिकॉज यू चेंज एज अ पर्सन एंड यू रियलाइज कि आई एम रेडी टू मेक दैट मूव. Mm. एंड इट इज पॉसिबल कि आप चेंज ना हो, इट इज पॉसिबल कि आप जल्दी चेंज हो जाएं, इट इज पॉसिबल कि आप शुरुआत से ही स्टार्टअप करें. ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. Yes, and here let me share that why I left my government job. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को फाउंडर बनना था या फिर बिजनेस करना था. I just wanted to learn the business side of it. कोचिंग कैसे वर्क करती है and how to manage sales. I'm in love with the process of entrepreneurship. That's why means I jumped. And here let me share that means your book Build an Epic Career I just read and it was a game changing book. I think it is the best book on career basics से लेके end तक. And अगर मेरे को 23 साल में अगर किसी ने दी होती उस समय so the दैट journey इज would रियली have रियली been स्वीट. different. दैट्स द बेस्ट फीडबैक. मुझे बस यही सुनना था. Because it is having everything and in every case scenarios it was there. So I really love this book and I will definitely be giving this book to many people, many young थैंक graduates. यू, थैंक यू. दिस Yeah, इज सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. yes. So Uncle, let's take the journey forward and you are in your startup and then
you left the startup, or you left the startup with your friend के साथ में, and amicable separation it was. So how that decision went with you? It was, I'm so glad that both of us were adults about it, क्योंकि I had definitely made a lot. Founding CEO, he was the founder of the company as well. Mhm. तो एक सीईओ का बहुत क्लियरली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इंश्योर दैट द कंपनी हैज द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इट नीड्स टू, whether it is team, whether it is product. And me was not the best team, absolutely. So we had a very open, candid conversation, and he was like, यार नहीं चल पा रहा. And I was like, you know what, I agree, नहीं चल पा रहा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, and I also feel कि I'm not able to do the best that I can, and whatever I'm doing is clearly not enough. So we decided to separate, move our ways. And again, I didn't know what would happen because of that. I didn't know what the next step would be. But I was very clear कि यार यहाँ रहने से कुछ और होगा नहीं. It will just give me a fake sense of comfort. Mm-hmm. But it is not that I can build anything there. And that thankfully worked out, and I'm here. Wow, wow. And from there, again, you started own means Groupon and then Nearby. So how that courage came again? Because you have did the second study for around 4 years, 3 years. 3 years, and then Yes. again 3 years. you got the courage to start it over again with the हाँ. co-founders and क्योंकि द क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं है. okay. तो वो तो वही था कि इट इज the only thing that I know, it's the only thing that I enjoy, it's the only thing that I am good at. Mhm. तो करते हैं. एंड किया, और बहुत मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया. बहुत मुश्किल इंडस्ट्री थी, बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट था, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे काम करने वाले, and बहुत अच्छी टीम बनाई, बहुत अच्छा कल्चर बनाया. Okay. And yeah, I really enjoy building teams and building products, and that I think I will just continue doing for the rest of my life. And thankfully it's worked out so far, so I'm happy. So here comes the beautiful question. So बहुत अच्छी टीम थी, सब कुछ अच्छा था. Then why you left? नो, आपके आपके सवाल ऑलमोस्ट मुझे कहते हैं, पकड़े गए, पकड़े गए. द सिंपल आंसर वाज क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया, 8-9 साल हो गए थे ग्रुप ऑन नियर बाय चलाते हुए. Mhm. कंपनी प्रॉफिटेबल थी, टीम बहुत अच्छी थी, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे वहां होने या ना होने से कंपनी के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट वाज अ रियलाइजेशन कि आप ना अब सिर्फ कंपनी में इसलिए हैं क्योंकि आप कंपनी के साथ शुरुआत से थे, पर इसलिए नहीं है क्योंकि आप वाकई में इस कंपनी को किसी मैनर में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. बिकॉज वो बाकी टीम कर रही थी, एंड बहुत अच्छे से कर रही थी. एंड वक्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एसेट है. मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही एसेट है, वो है मेरा वक्त है. एंड इसलिए मेरा वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है. इसलिए मैं अपना वक्त किसके साथ, किस चीज पे क्यों बिताता हूं, वो बहुत जरूरी डिसीजन होता है. एंड दैट इज व्हाई आई रियलाइज कि यार यहाँ रहने से तो मैं अपना वक्त जाया ही करूंगा. मुझे नहीं पता कि मैं जिंदगी में और क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहने से तो वो नहीं पता चलेगा. सो 2019 के अंत में, अराउंड सितंबर अक्टूबर, आई स्टेप्ड डाउन एज द सीईओ ऑफ माय ओन स्टार्टअप, एंड डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, फिगरिंग आउट कि क्या होगा. 2020 में मैं 40 साल का हो रहा था. तो Mhm. वो होता है ना कि जब आपको पढ़ाई शुरू करनी होती है और 5:44 हुए होते हैं, आप बोलते हैं 5 बजे से शुरू करेंगे. एक राउंड फिगर आपके दिमाग में हमेशा बड़ा एक्साइटिंग होता है. तो मुझे लगा यार राउंड फिगर 2020 से ना कुछ नया शुरू करेंगे. Yes. 40 साल के भी हो जाएंगे तो एक राउंड फिगर होगा, तो तब शुरू करेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. Yes, and so let me also ask you that question because content journey, ठीक है, it looks very lucrative, ठीक है, content बना रहे हैं, but content is having his own journey, own challenges, own fears. वो सब कुछ सामने आते हैं, but
अब now you have been to this journey from last 5 years. So कैसे कैसे challenges आए और how you overcame, and have you thought that this journey would have been this amazing success story? I can start with the second one. No, I did not think that it would be so amazing and so much fun. Okay. सक्सेस तो चलिए किस पैरामीटर से लोग नापते हैं, कैसे नापते हैं, वो अलग बात होती है. बट am I having fun? Is this something that I would enjoy so much? Is it something that people will love so much? I had no idea and certainly no expectation. मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल हूँ. मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, बहुत सालों से रहा हूँ. और मैं 2020 में भी जब कंटेंट क्रिएशन एक्टिवली परस्यू किया, उससे पहले काफी टाइम से कंटेंट क्रिएट करता आ रहा था. Okay. लेकिन बहुत अलग कैटेगरी थी, बहुत अलग प्रेजेंटेशन था, बहुत अलग ट्रीटमेंट था. एंड 2020 से उसको काफी हद तक बदला. बट द मोस्ट, I wouldn't say the difficult part, but the most important part Important. Okay. is almost always the team or the people you're working with. And as a founder, you have to select them. You have to identify them. तो when you join a company, आप अपने colleagues को choose नहीं कर सकते. लेकिन जब आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, तो फिर तो आप ही चूज करेंगे. Yes. एंड उसके बावजूद भी अगर वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको काम करना पसंद नहीं है, या उनके साथ तनाव है, या उनके साथ मजा नहीं आता, या वो सही से काम नहीं कर पाते, या आप उनसे सही से काम नहीं करवा पाते, या आप उनके साथ आउटसाइड ऑफ काम कोई बात ही नहीं कर सकते, आप उनसे एक दोस्ती का रिश्ता नहीं बना सकते, देन तो फिर आप ही में कुछ खामी है. क्योंकि आप ही तो सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, आप ही तो डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किसके साथ काम करना है. सो फॉर मी इट हैज ऑलवेज ऑलवेज बीन अबाउट पीपल. एंड ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है. चाहे वो ग्रुप वन हो, चाहे वो नियर बाय हो, मैंने हमेशा लोगों को सबसे पहले रखा एंड उन लोगों के साथ काम करने का सोचा एंड प्रोसेस बनाया जिन लोगों के साथ मैं वाकई में काम करना चाहता था. एंड दैट हैज बीन in the current journey the most gratifying. I have a wonderful team. It's a very small team, but we have a lot of fun together. We respect each other a lot. We do our best work. We really push each other, and it's absolutely fun working. So then work doesn't seem like work. Work. Yes. It just doesn't seem like work. I met your Wari crew when we were in the same flight to Dharamshala. जो आपके साथ Oh, सेल्फी ली थी. Yes, we were yes, in the same of flight. course. Now I remember कि आप same ही flight पे थे. Of course, you shared the photograph that we had in the email, but I couldn't recall कि वो कौन से airport पे था. But now, yes, Yes, I yes. remember. And I was mesmerized by means वीडियो में देखा था, जब पहली बार वैसे देखा, you were very bright, very shining. अरे, it was always just the joy of working with the right kind of people. Wow, wow. So here let's also discuss about content journey में content बनाना, video बनाना. But apart from that, process and system is more important. And you have already shared in your videos Excel and how to do it, किस दिन में क्या क्या होगा and all that. So how, from where you came with this process, and so that a new entrepreneur or a new content creator, he or she also can get some inspiration. I think the real answer, and it's not a very useful answer, so I'm sorry for giving this answer, is I'm a very process driven person. एंड मैं जब से अपने आप को जानता हूं मैं ऐसा ही था. मुझे कोई भी मैं काम अगर कर रहा हूं, जल्द से जल्द 2 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं. इस काम में कौन सी वो चीज है जो रिपीट होती रहती है, Mm-hmm. और इस काम में कौन सी ऐसी चीज है जो ओकेजनली होती है. Okay. और जो भी चीज रिपीट होती है उसको मैं एक प्रोसेस में डाल देता हूं कि इसमें ना दिमाग नहीं लगाना, ये रिपीट है. तो चाहे धूप हो, छाव हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, ये होके रहेगी, Mm-hmm. क्योंकि ये प्रोसेस है, ये रिपीट होगा. और जो भी चीज इक्का दुक्का कभी कभी होनी होती है, उस पर आप फिर अपना वक्त बिताएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो ओकेजनली हो रही है, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. एंड इफ यू लुक एट कंटेंट, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज जस्ट रेपिटेशन. एडिटिंग रिपीट, Mm-hmm. जैसी वीडियो आएगा करना ही है. ऑडियो रिपीट, ग्राफिक, थंबनेल्स रिपीट, सबटाइटलिंग रिपीट. एंड आई वाज लाइक, यार
जो लोगों को क्रिएटिविटी वाली चीज लगती है कि वीडियो बनाना है, स्क्रिप्ट लिखना है वगैरह, उसको भी हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि आना तो मुझे ही है। तो हम्म, अगर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग को भी रिपीट कर दूं हम्म, और अपनी शूटिंग को भी रिपीट कर दूं, तो फिर मैं पूरे प्रोसेस को एक रिपीटेबल कंकरेंट प्रोसेस बना सकता हूं। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। सो एवरी मंडे आई शूट, ओके, एंड उससे पहले स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं। सो वो स्क्रिप्ट रिपीट मोड पे है, मेरा शूटिंग रिपीट मोड में है, जैसे मैं शूट कर लूंगा तो वीडियो एडिटिंग रिपीट मोड में है, हम्म, ऑडियो रिपीट मोड में है, सबटाइटलिंग रिपीट मोड में है, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेलिंग रिपीट मोड पे है। वो सब कुछ जुड़ के 2 हफ्ते बाद वापस आ जाते हैं, फिर गो लाइव रिपीट मोड पे है। तो सब कुछ रिपीट मोड में। एंड द ओनली थिंग दैट इज ट्रूली ओकेजनल इन कंटेंट हम्म, इज कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट वो भी हमने इतने नीच बना लिया है कि जैसे यूट्यूब पे पर्सनल फाइनेंस है, करियर्स है, यही तो हमारे चैनल है। तो हमें पता है कि पर्सनल फाइनेंस पे सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की बातें करनी है, करियर पे सिर्फ करियर की बातें करनी है। हाँ, अभी भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटा हमें पता चल गया कि हम किन चीजों पे बात करते हैं, किन चीजों पे बात नहीं करते हैं। एंड दैट जस्ट बिकम्स फेयरली ऑब्वियस देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वाओ, इट्स नॉट अ यूजफुल आंसर, क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट सजेस्टिंग कि यार अगर आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे तो आप ऐसा कर नहीं सकते। बट दैट्स नॉट व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव। आई लाइक टू बिलीव कि कोई भी इंसान अगर किसी भी टास्क को देखे और ये सवाल पूछे कि यार इस टास्क में से कौन सा टास्क रिपीटिंग है और कौन सा टास्क ओकेजनल है, और रिपीट वाले को प्रोसेस बना दो, ओकेजनल वाले पे अपना दिमाग लगाओ, then maybe they can also get to that same point that we have got to, where creativity for us is a process, and we are running what is a content factory, and content ship hota rehta hai every single day yes, without fail. mm. Continuous with the repetition of process. Wow. So Ankur, here comes means we have tracked down the whole 20 years of your journey, career, and different career, PhD in US, then consulting, then entrepreneurship, content, and you actually built an epic career in the last 20 years. So what means if I ask you top three learnings of this whole 20 years, 2 decades, what would that be? Oof, that's always a hard one. Yes. Let me try and attempt. Okay, so number one will be that career is a lot about consistency than about winning. You, if you are consistent, have a far higher chance of winning than if you focus more on winning. So focus more on being consistent. Number two, trust is almost everything when it comes to career. Trust. आप करियर में चाहे फाउंडर हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसर हो, if you have the trust of people, you will go very, very far. But if people cannot trust you intuitively or after they've seen your work, you will always struggle. Always. And number three, not so much career, but life in general, कि जब भी आप अपने आप को थका हुआ पाए, लाचार पाए, स्टक पाए, हेल्पलेस पाए, very few people, if at all anybody, will be able to understand what you're going through. And the only person who can help you in that moment is you yourself. So you cannot ever give up on yourself. And I think I am where I am because I never gave up on myself. Now, that doesn't mean if you believe in yourself, everything will work out. No. But if things have worked out, it is only possible if you continue to believe in yourself. Because that is the only entity that will truly understand what you're going through. और कोई नहीं समझ सकता। तो खुद पे कभी भरोसा मत। Yes. Wow. The self-belief is And the as long as you have these consistency, trust, and belief in yourself, things will work out. yes, whether it is job, whether it is consulting, or whether it is content creation, things will Exactly. work out. Yes. Exactly. So Ankur, we are at the end of our podcast, and so let's talk about from last 2 years. There's a lot of fuss about AI, and many things have moved. बहुत सारे jobs को
means it has been removed या फिर उसको automate हो गया. So what is all fuss about AI and where the career is going in this AI? मेरा ना, I think it's very hard to predict what's going to happen because of AI, but I can tell you this with conviction कि the future will belong to those who know how to work with AI or technology in general. I think if you are going to be scared and if you feel कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, you will fail. If you are going to be scared and be like अरे जॉब बदलने वाली है तो मुझे कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, इंडस्ट्री चेंज कर लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, यू विल फेल. बट इफ यू आर willing to make AI a friend and use it to elevate your work instead of creating your work, you will win. So if you're a content writer, don't use AI to write your content. You write your content and you use AI to enhance that content. If you are a graphic designer, don't use it to create that thumbnail or that graphic post. You create your thumbnail and your graphic post and use AI to enhance it. If you are a content creator, script writer, let's say a data analyst, don't use AI to do the work for you. You do your work and then ask AI to improve your work. Usse you will always be ahead of the curve. And that will be my way of proposing that you deal with this. Yes, we have to get hands on with the AI and it should Bilkul. enhance our work. Yes. It should enhance our work. Yes. So, Ankur, that was means my last question. We have talked about past, we have talked about present, and we have talked about how to choose career. And being on your on the podcast on 100 episode, it is like miracle. Means 5 years back, I have never thought that I will be having podcast and I will reach 100 episode. And on 100 episode, Ankur Wariko will come for the podcast. So it is like miracle happening to me. So I call it MDH, Miracle Do Happen Moment. Oh, that is so sweet. That is a good one. MDH. So the question is that what will be your MDH moment for next 1 to 3 years? Oh my God. Uh, it, Which is not planned. it is certainly not planned, and I have no way of getting it. But my MDH moment will be if I am face to face with Shah Rukh Khan in a conversation in the next 1 to 2 years. Wow, That will be my MDH because I have no idea why that would happen. I've no business being in a conversation with him. So if it happens, it'll be an MDH moment. Yes. So from here, I remember that your incident you shared in one of the, I think, talk about, means I think in TED Talk. Yes. What is, means Anupam Kher is interviewing Shah Rukh Yes, Khan. yes, Yes, exactly, yes, yes, exactly, yes, yes. exactly. If you can share, if that is the incident It, is inspiring you. that for me symbolizes Shah Rukh Khan in the best manner possible. तो अनुपम खेर अपने टॉक शो पे शाहरुख खान एज अ गेस्ट को लाए थे एंड ही आस्क्स शाहरुख खान कि शाहरुख आप इतने फेमस कैसे हैं, इतने सक्सेसफुल कैसे हैं? एंड शाहरुख खान इज लाइक सर मैं मेहनत बहुत करता हूँ. अनुपम खेर इज लाइक सर मतलब मेहनत तो मैं गंजा तो नहीं हो गया हूँ ऐसे ही जिंदगी जी जी के, मैंने भी मेहनत करी है, बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं. तो एंड ऑफ कोर्स अनुपम खेर इज respectable gentleman, so he wouldn't say all of that, but I'm sure in his head he was like, yeah, come on. तो फिर वो बड़े तहजीब से पूछते हैं कि शाहरुख मेहनत तो सभी करते हैं, तो आपकी मेहनत में अलग क्या है? फिर शाहरुख बोलते हैं कि सर मौका पाने के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, मौका पाने के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन मौका पाने के बाद मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता. एंड दैट इज इनक्रेडिबल. दैट इज हिम. दैट इज एब्सोल्युटली हिम. आई लव दैट. I know. And I think if everyone lived life like that, it'll be an incredible life. Yes, everyone gets the opportunity, but yes, after that, who will take the courage to work on it? Yes. So, so that was amazing. And when I heard from your TED Talk, I am also always remember that incident and that quote that after getting the opportunity, we should work hard. Exactly.
So Ankur, that was my last question, and I'm so thankful and grateful that you spare your time and came on the show. I'm truly grateful for you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Congratulations again on 100th episode. मेरे लिए, it is a symbol and a mark of consistency, which is something that I value a lot in me and I respect in others. So I know कि आसान नहीं होता 100 episode of a podcast release करना, and I'm sure that this will set you up for many big things going forward. So all the best, Rakesh, and thank you again for having me. Thank you, Ankur. All the best. Thank you. Thank you for being part of this journey. Whether you have watched one episode or 100, dropped a comment or share it with a friend, your support means a lot to us. Because of you, we are now going global, recorded episode across 4 countries and 7 cities. And yes, we just hit our 100th episode. If you have been loving the content and want to see more powerful stories of career transformation and life fulfillment, do us a quick favor. Subscribe to the channel. Share this podcast with at least 10 people. And drop a comment telling us which guest you'd love to see next on Let's Talk Clarity. Let's keep spreading clarity and hope, one story at a time. I'm Rakesh Mathuria, your coaching business mentor and host of the Let's Talk Clarity podcast.